Hello students, how are you all? Welcome to our channel Weekend. Today we will discuss the question answer of chapter number 2 of political science, that is parliamentary form of government. So let's start the chapter with a very short question answer. The question number first is name the two houses of the Indian Parliament. So the two houses of the Indian Parliament are the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Very simple. What is the tenure of the Lok Sabha? So the tenure of the Lok Sabha is 5 years. ठीक है. And question number 3 is write any 3 qualification for becoming the president of India. So the 3 qualifications for becoming the president of India are he or she should be a citizen of India. Of course, first यही होगी. Second is he and she must be enlisted in the voters list. Okay. Third is his and her age should be 35 years or above. इससे ऊपर होनी चाहिए या फिर 35. ठीक है. And fourth is he or she should not be government servant. Very easy. ठीक है. Now the short question answer. The first question is under what circumstances does the president use emergency powers? So the president uses his or her emergency power under 3 circumstances. First is when there is a danger of foreign attack. Second, if there is financial crisis before the country. And third, in case of failure of constitutional machinery. ये 3 रीज़न है. इसको हम we have already discussed about these reasons in the chapter's discussion. Okay. Question number 2 is write a note on the composition of the Lok Sabha. So what is the composition of Lok Sabha? There may not be more than 552 members in the Lok Sabha. First तो यही होगा. And out of these 530 represent the states and 20 represent the union territories. There can be 2 nominated members if there are no representatives of Anglo-Indian community and they are nominated by the President of India. पूरा इसका हमने पढ़ा था बाइफिकेशन किस तरीके से होगा 552 मेंबर्स का. ये है इसके और ये हम कैसे निकलते हैं 552 मेंबर्स ही क्यों, ये भी डिस्कस किया था हमने चैप्टर में. ठीक है ना. Question number 3 is how are the president and vice president elected? So the president of India is elected indirectly and electoral college elects him. Means electoral college होता है वो elect him. The elected members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and MLS, this member of the legislative assembly. Okay. And make this इलेक्ट्रल कॉलेज. ये इस इलेक्ट्रल कॉलेज में होते कौन कौन से मेंबर्स हैं तो वो लिख रखे हैं कि लोकसभा राज्यसभा और स्टेट्स में जो एमएलएज होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं. वो मिलके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं. एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा. इनमें एमएलएज और इनका कोई रोल नहीं होता. ठीक है. Question number 4. Evaluate the role and functions of the Council of Ministers. So there are 3 categories of the ministers, namely Cabinet Minister, State Ministers and Deputy Ministers. They are together called Council of Ministers. The Council of Ministers formulate फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक पॉलिसीज. ये उनका फर्स्ट आप कह सकते हैं कि किस तरीके से उनका रोल है या उनका फंक्शन जो है. फर्स्ट फंक्शन उनका यही है कि डोमेस्टिक पॉलिसीज हो या फॉरेन पॉलिसीज हो वो सब कुछ वो ही फॉर्म करते हैं. ठीक है. सेकेंड इज इट टेक्स ऑल मेजर डिसीजंस. सब मिलकर जो है सारे नेशन से रिलेटेड मेजर डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज है ना. इट कंट्रोल्स द एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्री. सारे जो बजटिंग है सारा फाइनेंस इन्हीं के हाथ में होता है. एंड इट डिसाइड्स अबाउट द न्यू टैक्सेस.
न्यू टैक्सेस कौन से लगेंगे, ये सब भी ये डिसाइड करते हैं। तो ये 4 मेन फंक्शन हमने बता दी किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो जनरल सी बात है, सभी को पता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू नो अबाउट द मिनिमम wages act? So the minimum wages act was enacted in 1948. The new rates of fixed salaries came into force in January 1953. The rules were subjected to periodic revision. The aim of the act was to ensure the welfare of the workers by fixing minimum wages. It did not prove very effective. Why? It had many drawbacks. It was amended in 1990, but it was not implemented. Still, the condition of workers is pitiable. Okay. Now the question number 6. How does illiteracy and poverty together prepare ground for the exploitation of any class or an individual? Okay. Illiteracy and poverty prepare the ground for the exploitation of the weaker class or individual. This is so because of lack of education and other means essential for survival. This vulnerable class lacks awareness about their fundamental rights as a citizen of the society. In fact, illiteracy and poverty are both a cause and effect of each other. Illiteracy होगी तो poverty भी होगी, और poverty है तो illiteracy अपने आप ही होगी. ओके, क्योंकि लिटरेसी से पहले इंसान अपने बेसिक जो नीड्स है उनके बारे में सोचेगा, जो दिन अपना फूड है, आप जानते ही हैं, क्लोथ्स हैं और रहना है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचेगा, उसके बाद लिटरेसी का नंबर आएगा। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को बहुत इफेक्ट करती हैं, ठीक है। नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, explain the powers of the president of India. So following are the powers of president of India. First of all, executive powers. So all important official appointments are made by him or her. All treaties are signed in his or her name. He or she administers all the union territories. ये उनके executive powers है. Okay. Now the legislative powers. So he or she can dissolve the Lok Sabha. He or she can issue an ordinance when the parliament is not in session. Third is a bill become a law with his or her assent. ये उनकी legislative powers. And now the judicial powers. So he or she can pardon or reduce any punishment. He or she appoints the Chief Justice of the Supreme Court. He or she also appoints other judges of the Supreme Court and High Court. Third is he or she is not answerable to any court of law. ये उनकी जुडिशियल पावर्स हैं, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आप लोगों को इफ़ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. ओके. Now the financial powers. No money bill can be introduced in Lok Sabha without his or her prior permission. पहले permission लेना ज़रूरी है. And he and she can sanction money from contingency fund. ये उन्हीं के पास पावर होती है, ठीक है. Now the emergency powers, very important. He and she can declare emergency in 3 cases: when the country has been attacked or invaded, when there is financial crisis in the country, or when a state government does not work in accordance with the constitution. ये 3 कंडीशन होंगी जब जो है आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करने की. And now is martial powers. So he or she is the supreme commander of the defense forces of India. जो भी 3 defense forces हैं उन सब के supreme commander कौन है? President. Okay. Now the question number 2. Describe the composition of the Rajya Sabha. So the Rajya Sabha consists of 250 members.
Among them, 238 members represent the states and the union territories, and rest 12 are nominated by the President of India. These nominated members are distinguished persons in various fields like लिटरेचर है, आर्ट है, साइंस है, सोशल वर्क है, फिल्म है, स्पोर्ट्स है, मीडिया है, इस तरीके के जो भी है 12 फील्ड्स हैं उनसे जो है नॉमिनेट करते हैं. कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है ना. ये हमने इसका पहले भी पूरा राज्यसभा का पढ़ा था कि कंपोजिशन कैसे होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. Elaborate the procedure of passing a bill. एक बिल कैसे उसका प्रोसेस बताना है हमको पूरा कि कैसे पास होता है. सो स्टार्ट. द बिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. फर्स्ट डिस्कस द ordinary bill. The procedure of passing of an ordinary bill is as follows. First of all, the bill can be introduced in either house of the parliament. किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. सेकेंड इज द बिल हैज़ टू गो थ्रू 3 स्टेजेस. फर्स्ट रीडिंग, the introduction of the bill. Second reading, discussion of the bill in detail. And third reading, in which the bill is given final shape. Then the bill in the other house, the bill has to undergo 3 stages in the other house also. ये जो 3 stages first उसमें हुई थी वो second house में हुई होगी. In case of differences of opinions between the two houses, for example, one passes and other rejects, the joint session is called and the fate of the bill is decided by voting की जाती है. ठीक है ना. फिर डिसाइड होता है कि क्या होगा. Then the bill is sent to the president for his approval, and the president gives his approval and the bill becomes law. ये तो हुआ हमारा ordinary bill. अब इन केस और इसमें एक कंडीशन और है. इन केस द प्रेसिडेंट सेंड्स इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, so the parliament may or may not approve his changes and sends the bill to him for his approval again. तो फिर then president has to sign on that approved जो बिल है उसके ऊपर साइन उन्हें करना ही पड़ता है. ठीक है ना. Now the money bill. So the money bill can be introduced only in the Lok Sabha. The Rajya Sabha has to return it within 14 days. If it does not return the bill in 14 days, it is assumed to be passed by it. ऐसा assume कर लिया जाता है कि वो पास ही है अगर 14 days के अंदर जो कुछ भी उनको एडवाइजरी है या जो कुछ भी उनको लगता है कि ये और ऐड किया जा सकता है या ये कम किया जा सकता है तो वो उनको 14 डेज के अंदर ही उनको एडवाइस करना है. अदरवाइज उनको अज्यूम पास्ट अज्यूम समझा जाएगा. ओके. द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस with his prior permission. Thus with the signature of the president the bill becomes a law. जब उनके प्रायर परमिशन से हुआ था यानी उनको सारी कंडीशन पहले ही क्लियर थी कि इस बिल में क्या क्या है तो उनको दोबारा परमिशन के लिए टाइम नहीं होता. उनको जैसे उनके पास बिल जाता है दोनों हाउसेस से क्लियर होकर तो उनको साइन करना ही होता है और इस तरीके से बिल बिकम अ लॉ. Now the question number 4 is evaluate the role of Prime Minister in Parliament or Union Government. So the Prime Minister is the leader of the majority party in the Lok Sabha. He presides over the cabinet meetings. He is a link between the cabinet and the president of India. He is the main policy maker of the nation. Ministers are the appointed on his recommendation. If he resigns, it is considered the resignation of the council of ministers also. यानी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो अपने आप उस जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे हो सकती है तो वो अपने आप उनका भी रेजिग्नेशन अज्यूम किया जाता है. ठीक है ना. ये है प्राइम मिनिस्टर का रोल. तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Now the question number 5 is in theory the president of India can be removed from his office by impeachment but practically it seems to be impossible. Why?
So, impeachment is a complex process and can be initiated by any house. It requires one-fourth majority of the house and 14 days written notice, and two-thirds of the members' support is required for consideration of other house. ये इतनी सारी मतलब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी फुलफिल होंगी जब आप एक इम्पीचमेंट के प्रोसेस को जो है आप कर सकते हैं यूज़. और it's not very easy, it's a very tricky or complex process. Okay, now the question number 6 is, why does the president nominate two members of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha? So president nominates two members of Anglo-Indian community in the Lok Sabha so that they as minorities can be represented in the Indian Parliament. यानी माइनॉरिटी का भी ध्यान रखा है कि कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दे आर outers or somebody is exploit their rights, और मतलब they feel very safe in a way, कह सकते हो आप कि माइनॉरिटी होने के नाते उनको थोड़ा सेफ फील होता है कि उनके इस तरीके से ओके दे हैव टू मेंबर्स पोजीशन इन लोकसभा. तो ये इनका प्रोसेस होता है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है. और I hope you understand the question answer. If you like the video, please like, subscribe and share. Goodbye, have a nice day ahead.